It is October 2024 paper, question number 15, in which an athlete is jumping, and when he jumps, then obviously he exerts a force 890 Newton. This value is given, and he exerts this force on the ground. This is the action, and according to Newton's third law of motion, the ground exerts equal and upward force on athlete, and this force acting upward, and obviously this force is greater than his weight. That's why there is a resultant force in upward direction, and this resultant force accelerates the athlete in upward direction. So the question is very simple. And now the next, हाँ हाँ बेटा बोले, हाँ बेटा, अच्छा 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 अच्छा, चलो बेटा ठीक है. अच्छा जी, now question number B part. The B part is, as the athlete moves horizontally, you know, when an athlete is in a high jump competition, then obviously the motion or trajectory of the athlete will be projectile trajectory. And in this projectile trajectory, as you know, there is a horizontal motion as well as vertical motion. So we are given the kinetic energy of athlete, okay, and we have to show that his speed is 3.4 meter per second. So this part is very simple. We should not solve it. Only I am writing the formula. Kinetic energy is equal to half, and the mass of the athlete is not given, but you can calculate mass by dividing gravity, and you can calculate velocity, which we are not solving. You are given kinetic energy, all the values are given, then obviously you can calculate velocity. But this velocity is horizontal velocity. Sir, why? Because the athlete is jumping, and when athlete is jumping, then obviously he is in horizontal motion as well as in vertical motion. And in this question, you are given when athlete moves horizontally. So this kinetic energy is horizontal kinetic energy, and remember at the highest point, the vertical kinetic energy becomes zero. Sir, why? At the highest point, the vertical velocity becomes zero. When vertical velocity becomes zero, then obviously kinetic energy becomes zero. But when the athlete is jumping over a height, then at a maximum height, vertical velocity is zero, but horizontal velocity we have calculated. And in the next part is also very simple, which we should not solve. The question is, when the athlete is moving down and he is going to land, then obviously the athlete is moving down like this, and when athlete falling down like this, then it is given the vertical distance he has covered, it is 1.4 meter. It is the vertical distance. And now they are asking calculate velocity. Okay. And remember, if you are given vertical distance, you know vertical distance means height. It means you can calculate his vertical velocity. You can calculate his vertical velocity. And remember, if an object is moving from highest point to the ground, then his initial vertical velocity will be zero. So, but Simra, can you suggest me any equation of kinematics in which uh, height is given, final vertical velocity we have to calculate, initial vertical velocity is zero? Ji, but Simra, can you give me suggestion, equation of kinematics, athlete falling down freely? Simra not suggesting me, so I am writing formula myself. This is, you know, third equation of kinematics. And in this third equation of kinematics, 2 is constant, gravity is 9.81, height is given 1.4, final vertical velocity you are calculating, initial vertical velocity is considered zero. If this is a projectile motion and object is falling down, then initial vertical velocity is zero. And if you calculate final vertical velocity, calculation is simple, then final vertical velocity will be 5.24.
this will be final vertical velocity. But if you read the question, they are not asking vertical velocity. They are asking calculate velocity. Calculate velocity means they are asking calculate resultant velocity, calculate total velocity. But Banin, if you know horizontal velocity, this is horizontal velocity, and if you know vertical velocity, and remember this horizontal velocity at the highest point. At the highest point, this is the horizontal velocity, but you know during projectile motion, horizontal velocity remain constant. Horizontal velocity remains constant. So we should not need to calculate again horizontal velocity. So horizontal velocity remains same. Vertical velocity we have calculated right now. Banin, can you suggest me which formula should I use to calculate resultant velocity? Should I add them simply? Yes, we will use Pythagoras theorem. Your answer is perfect. Sir, if we have vertical horizontal velocity, if we have vertical velocity, then velocity is a vector quantity. It should not be calculated simply addition, but we should use Pythagoras theorem. And in Pythagoras theorem, there will be formula square of horizontal velocity, square of vertical velocity, and then you can calculate square root, and then you calculate this number. All the numbers are given. I'm not wasting your time. So the answer will be 6.27 meter per second. Okay. And now, beta Simra, are you in class? Simra, Simra. Acha beta, we have calculated total velocity. We know horizontal velocity, vertical velocity. We have calculated total velocity. But now the final part, calculate the angle with vertical. Then how do you calculate this angle with vertical? Simra beta, I am asking vector question. Yes, you are right. We will use tan theta, and tan theta is equal to, हाँ बेटा, बेटा 6.25 और 6.275 में कोई इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं बेटा जाने में. अच्छा, आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने 3.4 लिखी है, मार्किंग स्कीम में 3.44 लिखी हुई है, तो इस एक आध डिजिट से भी बड़ा फर्क पड़ जाता है. ठीक है, इन्होंने 3.44 यूज किए एंड आई गेव यू ओनली 3.4. ठीक है, तो आप 3.44 से करोगे तो आंसर 6.27 आ जाएगा. तो इतनी छोटी बात को बेटा इग्नोर कर देना चाहिए ना बेटा बनाई. अच्छा जी, राइट नाउ वी आर सॉल्विंग tan theta इज इक्वल टू opposite side is horizontal velocity. Opposite side is horizontal velocity. Okay, and adjacent side is vertical velocity. Okay, and we are calculating theta, so theta will be equal to tan inverse. So horizontal velocity is 3.44 and vertical velocity is 5.24, and when you calculate tan inverse it will be 33.3. तो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन पूरा ही सॉल्व कर लिया मैंने, नहीं करना चाहिए था, ऑल दो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल नया है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं किया हुआ. ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अ हाइड्रोमीटर. ठीक है, होता होगा कुछ हाइड्रोमीटर. दिस इज अ हाइड्रोमीटर एंड द हाइड्रोमीटर सिलेंडर floats vertically in a liquid. Diagram is given. Okay, the diameter of hydrometer is x. Okay, this x is the diameter of hydrometer. Okay, a student placed the hydrometer in a sample of pure water. The question is complete the free body diagram below to show the forces acting on the hydrometer. Acha beta Abdullah, I am asking you the weight of the hydrometer acting downward and which force will be acting upward. Which forces will be acting upward? Drag and upthrust. You are wrong. Okay, your answer is wrong beta. Drag acts when object is moving. If the object is stationary, okay, there is no drag force. Only upthrust acting upward, weight acting downward, no drag force. Drag force acts when body moves through a fluid.
If it is not moving, then there is no drag force. Only weight acting downward and same length upthrust you should draw in upward direction. And now this is the question. ये बहुत अच्छा सवाल है और इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको सोचने का मौका दूंगा और बेटा जैनब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा जैनब द क्वेश्चन इज द सेम हाइड्रोमीटर is placed in sea water and sea water density is greater than pure water. Okay, same hydrometer in pure water as well as in sea water. At equilibrium, the vertical position of hydrometer was higher in sea water. You can see this depth is lesser and this depth is greater. Okay, the question is explain why the vertical position of hydrometer was higher in seawater than in pure water. The question is why. Consider this is A, consider this is B. So simply you have to explain why B is greater than A. Give it a sign up. Try to think. Uh-huh. Uh-huh. Actually, upthrust for both cases is same because upthrust is balanced by the weight of the hydrometer. The weight of the hydrometer is constant. If the weight is constant, then obviously upthrust is constant. So your this explanation, if the density is greater than the upthrust is greater, it is a wrong explanation because upthrust is balanced by the weight of the hydrometer. So weight remains same. If the weight remains same, then obviously upthrust is same in both cases. In pure water, in and in sea water, upthrust is same. No change in upthrust. जी बेटा. Okay. अच्छा मैंने इक्वेशन लिख दी अब आप कोशिश कीजिए समझाने की मुझे और ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अपथरस इज सेम जी सेम हाइड्रोमीटर एरिया इज सेम नाउ आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन बेटा जैनब 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 मैं भी बेटा मनाइल आपकी तरफ आ रहा हूँ जी बेटा हाँ बेटा जैनब कोशिश कीजिएगा अब तो मैंने बहुत आसान कर दिया देखिए अरे चलिए अपने हाँ हाँ बोलो नो 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 एक और गलती आप कर रही है देखिए कभी भी डायरेक्टली इन्वर्सली चेक करना हो ना बेटा तो हमेशा उनको आइदर साइड्स पे रखें आप सेम साइड पे रख के कभी भी नहीं बोल दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चलें ये भी आपकी मैंने करेक्शन कर दी अब आप चले बोले अब आप बोले जी जी डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इमर्ज्ड इनटू द वाटर हाँ जी 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 ठीक है बेटा अब आपके सामने पूरी इक्वेशन लिखी हुई है पूरी इक्वेशन देख के तब आपको बेटा पूरी बात समझ में आ गई इसमें हुआ क्या ठीक है लेकिन ऑब्वियसली जब हम आंसर लिखते होते हैं एंड इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वी शुड राइट समथिंग ठीक तो पहला जो पहला पॉइंट लिखेंगे ना ये वही वाला पॉइंट होगा जो आपने मिस्टेक की थी आपने कहा था कि सर डेंसिटी ग्रेटर हो गई है तो अपथरस ग्रेटर हो जाएगा तो ये सेंटेंस तो गलत था तो पहले हम ये वाला सेंटेंस लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में बेटा ये वाली बात भी बैठे जरा लिखिएगा इसका आंसर एज the weight of hydrometer remains same, obviously weight is not changing. The weight of the hydrometer remains same, so upthrust in both waters remain same, remain equal.
So there is no change in upthrust. Okay, upthrust remains same, and when upthrust remains same, then the relation with density is equal to volume of object or volume of water displaced by a hydrometer. The density is inversely proportional with volume of water displaced by object. So, and then volume is equal to area into length, and area is also same. Area is also same. So, for seawater, density is higher. So, hydrometer depth in water is lesser. Okay, and then you can explain in your own wording. So the key concept is when you are placing hydrometer in the water, then the weight of the hydrometer in both cases remains same. If the weight is same, then obviously upthrust remains same. For same upthrust, G is same. So actually density is inversely proportional with the volume of liquid displaced by the hydrometer. And volume is equal to product of area and length, and area is same, then obviously length changes with density. तो हम अच्छा खासा एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपने भी मुझे समझा दी है बात, तो मुझे लंबी नहीं करना चाहिए और मुझे आगे जाना चाहिए. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. हाँ हाँ बोलिए. बनी बेटा. हाँ. नहीं नहीं नहीं. अपथरस रिमेन सेम. The value of upthrust only depends upon कि how much the object immersed into a liquid. ठीक है. जितना लिक्विड के अंदर डूबा हुआ होता है उस उतने डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर के वेट के बराबर उस पर अपथरस लग रहा होता है. तो मैं आपकी बात पे हाँ नहीं कर सकता. अपथरस रिमेन सेम अगर वो फ्लोट कर रहा है. अगर वो फ्लोट कर रहा है. ठीक है. बनी. अच्छा ऊपर कैसे जा रहे हैं. मतलब इस वाले केस पे जो भी आपके सामने रखा हुआ है. तो देखिए ना चक्कर ये हुआ कि जब आपने हाइड्रोमीटर को प्योर वाटर में रखा. ठीक है ना. तो इट रिक्वायर्स अपथ्रस्ट. ठीक है जनाब. उसको जो अपथ्रस्ट चाहिए, दिस अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोमीटर. ठीक है. तो जब उसको अपथ्रस्ट उस वेट ऑफ लिक्विड के बराबर चाहिए, और जाहिर सी बात है वेट ऑफ द लिक्विड इसके अंदर कम हो गया. ठीक है. जब कम हो गया है तो उस अपथ्रस्ट को मेंटेन करने के लिए जो हाइड्रोमीटर है इट इज इमर्ज्ड एट ग्रेटर डेप्थ इन दी वाटर. ठीक. और सबसे अच्छी बात तो बेटा इक्वेशन से समझ में आ जाता है. आप इक्वेशन लिखो. इक्वेशन में देखो कि कौन कौन सी क्वांटिटी सेम है. ठीक है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग देन ऑब्वियसली वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट. पहली बात. वेट चेंज नहीं हो रहा तो अपथ्रस्ट भी चेंज नहीं होगा. अपथ्रस्ट इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, area of hydrometer is constant, then obviously density is inversely proportional with the depth of object immersed into the water. तो वो डेप्थ डेंसिटी के साथ इन्वर्सली और उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर लें तो बेटा बनी ज़्यादा सा समझ में आ जाएगा. अच्छा जी. नाउ वी आर स्टार्टिंग कैलकुलेशन. कैलकुलेशन इसकी बहुत मुश्किल है. क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको हाइड्रोमीटर का वेट बता दिया है. इट मीन्स ये आपको उन्होंने अपथ्रस्ट बता दिया. तो अपथ्रस्ट मैंने बताया दोनों का सेम होगा. ठीक है ना. वेट ऑफ द हाइड्रोमीटर इक्वल्स टू अपथ्रस्ट. अच्छा जी. एंड नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट चेंज इन वर्टिकल पोजीशन ऑफ हाइड्रोमीटर व्हेन मूव फ्रॉम प्योर वाटर इनटू सी वाटर. तो प्योर वाटर में आपने इसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है. सी वाटर में आपको इसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट देयर डिफरेंस. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट देयर डिफरेंस. आपने ये वाला डिफरेंस कैलकुलेट करना है. डिफरेंस. इस डिफरेंस को बेटा मैंने डी बोल दिया. एंड यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस. ठीक है जी. अब डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन बेटा 2 मिनट आप पहले खुद से तो ट्राई कीजिए. पहले खुद से सोचिए इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत होगी. ऊपर वाले पार्ट में उन्होंने कोई वैल्यू दी हुई नहीं है. वी आर नॉट गिवन एनी वैल्यू.
लेकिन मैं इसकी पिक्चर को आपके साथ पिन कर देता हूँ. And now you have to try to solve this question, and I am giving you just 2 minutes. Then I will start to solve. G, try to solve. The depth in pure water is denoted by small b, and the depth of hydrometer in seawater is a, and then you have to calculate their difference. You have to calculate their difference. And upthrust equal to the weight of the hydrometer. X is the diameter of hydrometer, and it will be used to calculate the area, and the area will be pi x square. X is the diameter of hydrometer. I think you should calculate first the area because it will be used again and again. You are calculating, I am waiting.
So you are solving, I am waiting. Okay, but I think I should explain. Okay, okay. In this question, as I said, the upthrust remains same, and upthrust equal to weight of hydrometer. The weight of hydrometer is 0.324. After Simra, I am solving. Simra, Abdullah, I am solving, beta. The weight of the hydrometer is 0.324, and this weight equal to upthrust. Weight equal to upthrust. Sir, we are given weight. You know upthrust is equals to density, gravity, volume. Okay, and this volume is equal to area into length. Length immersed into the liquid. So the density of water 997, gravity 9.8, area, sir, we have calculated earlier. It is 4.75 exponent minus 4. Then you are calculating this depth which is immersed into the pure water. Hydrometer depth in pure water. This is B. And the same method I applied for seawater, in which only I change the notation A. A is the depth of the hydrometer in seawater. The weight remains same. The density of seawater is 1025. Gravity is 9.8. The area of hydrometer remains same. Then you can calculate A. And the difference will be the change in vertical position. सिमरा बेटा कैलकुलेशन समझ में आई? सिमरा, is it clear? Okay, and this length answer I am writing, it should be 0.0076 meter. 0.006 meter. In pure water, हाँ हाँ, जी जी, खाली डेंसिटी से कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? हाँ ना, मास नहीं दिया हुआ ना, या फिर वही लंबी कहानी पड़ जाएगी बेटा, पहले मास निकालें। बात वही होगी, मैं आपकी बात समझ गया, मैं पहुंच गया। अब आप पता है क्या कहना चाह रही हैं, मैं आपकी बात समझ गया कि ये वेट है, वेट को ग्रेविटी से डिवाइड कर दूंगा ना तो ये मास बन गया एक तरह से। ठीक है, ये मास बन गया, और मास को उन्होंने वॉल्यूम से तो डिवाइड करवाया है, तो वो डेंसिटी बन गई। ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने किया मेरे ख्याल में इट इज सिंपल, कि अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट, वेट इज गिवन, upthrust density of water g volume, and volume is area into depth. So we calculated these two number। और अगर मैं ये भी बता दूं कि स्मॉल b जो आ रहा है, जो ग्रेटर डेप्थ आ रही है, ये तो आखिर आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर में, बिला वजह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड नाउ we should move forward in the next question. Question number 17. I think it is very very simple. The first part, mathematical part मुझे explain करने की ज़रूरत है, ठीक है? Mathematical part we should solve. लेकिन इसका जो ये वाला part है, this is very simple. If you read and read its marking scheme which I have copy pasted, then I think कि हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। जी बेटा मनाइल, आप कुछ कह रही हैं? बेटा इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है, इंडिकेटिव क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है जी। अच्छा जी, बी पार्ट मुश्किल है, इट इज नॉट सिंपल, तो वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट। ठीक है जी, वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट। द क्वेश्चन इज, द ब्रिज इज अबव अ रिवर, द स्टूडेंट विल रीच द रिवर इफ द रोप स्ट्रेचेज टू अ लेंथ ऑफ 35 मीटर, stretches to a total length of 35 meter. Okay, this is the length. The original length is 17 meter. The original length is 17 meter.
अच्छा जी, 17 meter. So how much extension is required? Sir, required extension is 35 minus 17, and I think it is 18 meter. Am I correct? ठीक है जनाब. Required extension is 18 meter. Okay. So let's start to solve this question. So the question is, when the jumper jump, then obviously he will lose gravitational potential energy. Gravitational potential energy. And as the rope is stretching, then obviously there will be gain in elastic potential energy. Elastic potential energy. Okay. And when it reaches to breaking point, I think rope behave like a spring. Okay. And original length is this. ठीक है. अच्छा जी, the loss in gravitational potential energy, sir, we can calculate in this way. It is mgh. The mass of the student is 65 kg. Mass is 65 kg. Gravity is 9.8, and the person has to fall down 35 meter. He has to fall down 35 meter. Okay. And the gain in elastic potential energy will be half. Sir, we are given spring constant, stiffness constant, that is K. And we have a gain in elastic potential energy formula. Uh, Sir, what is elastic potential energy formula? Sir, we have two formulas. Half F extension, or this F can be replaced by Kx. So equation becomes half K extension square. Half K extension square. So sir, we are given K. We are given K. Sir, K is 250, and we are calculating extension. We are calculating extension. Okay. So now calculate extension. I am waiting. बेटा कैलकुलेट करके बताएं कितनी एक्सटेंशन हो सकेगी जबकि रिक्वायरमेंट 18 मीटर की है. रिक्वायरमेंट 18 मीटर की है. When the bungee jumper moving down, falling down, he is losing gravitational potential energy. (13.35). It means कि rope can extend maximum 13 point. बेटा बनिए दोबारा बने 13.35. This is the maximum extension. This is the maximum extension. Okay. So this extension is possible for rope, and requirement is 18 meter. Required extension to uh, to reach the river, is 18 meter. So it is not possible, or bungee jumper cannot reach the river. Bungee jumper cannot reach the river. ठीक है बेटा. When bungee jumper is jumping, he is losing gravitational potential energy. Gravitational potential energy equals to mass g depth, because he is falling down.
So he is losing gravitational potential energy, and this gravitational potential energy is converting into elastic potential energy. And for this elastic potential energy, extension is 13.35 meter, but the required extension is 18 meter, because up to 17 meter, up to 17 meter there is no extension. up टू 17 मीटर देयर इज नो एक्सटेंशन। ठीक। अच्छा जी, इस कैलकुलेशन में मुझे खुद अपने ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद कोई मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। शायद मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। कोई और स्टूडेंट इस पे दिमाग लगाए बेटा। आपको मेरी बात सही समझ में आ रही है या इसमें कोई गड़बड़ है? ठीक है सर, कोई गड़बड़ नहीं है, जाने दें, क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी जो स्टूडेंट है ही इज नॉट रीचिंग द रिवर, और उन्होंने थोड़ा सा मेथड डिफरेंट किया, बहुत थोड़ा सा। उन्होंने भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। ठीक है जनाब। उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट की है और मैंने एक्सटेंशन। ठीक है जी, मेथड इज परफेक्ट, ओके, मेथड इज ओके, मेथड सही है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। नहीं, ये क्या और है क्या? अच्छा, चलिए जरा जल्दी से सवाल को देखें, जल्दी से सवाल को देखें। अगर एक और क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको जल्दी से निपटाइएगा ताकि आज ही पेपर हमारा खत्म हो जाए। सुनिए, क्वेश्चन है, sir, stress is given, radius is given, you have to calculate force. So we are not solving. Sir, stress is equal to force divided by area. All the values are given. You have to calculate force. Sir, stress is 4.3 megapascal. Radius is 1.9 exponent minus 6 meter. Then obviously you can calculate force easily. तो फोर्स कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द वैल्यूज आर गिवन। इट विल बी 4.88 एक्सपोनेंट माइनस 5 न्यूटन। सिंपल। एंड नाउ द बी पार्ट, the scientist investigated a thread of length 25 meter. It is the original length. Determine the length of the thread when stretched to its limit of proportionality. It means they are asking calculate the final length of the thread. You are given Young modulus, you are given stress. Okay, so how do we calculate? Sir, we are given Young modulus and stress. Sir, Young modulus is equal to stress over strain. Okay, so first we will calculate strain. Strain equal to stress. Stress is 300 megapascal divided by Young modulus, and Young modulus is 8.7 gigapascal. So you should calculate first strain. And you know strain equal to extension per unit length. So you can calculate extension. You can calculate extension. Length is given, sir. Length is 25 meter. Length is 25 meter. So first you should calculate extension, and extension will be 0.862. This is the extension. The initial length is 25, extension is 0.826, and they are asking final length. Sir, final length equal to their sum, 25.862. So this is simple question. So I am moving fast. And in this question, I am asking Abdullah. Yeah, Abdullah. Abdullah, are you in class? Abdullah beta, this is stress, this is strain, and you are given graph for spider, spider silk you are given. Okay. And now they are asking to draw the graph for steel. For steel. जी बेटा Abdullah, the steel graph will be red color or blue color.
You have to decide with reason. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं पूछता अब्दुल्ला मैं आपसे कभी भी. The question is, you are given graph of spider silk. You are given graph of spider silk, and spider silk young modulus is given. Spider silk young modulus is given. You have to sketch a graph for steel. You are given young modulus for steel. I am asking you, कौन सा ग्राफ स्टील का होगा, रेड वाला या ब्लू वाला अब्दुल्ला? हाँ बेटा. वाई? अंधी नहीं मारना जी. रीजन दीजिए. वाई? आपका आंसर सही है, ठीक है ना. रीजन दीजिए. या अल्लाह. बेटा, स्ट्रेस इज अलोंग वाई एक्सिस, strain is along x axis, so their ratio is called gradient. Quantity of y axis divided by quantity of x axis, it is called gradient. You know, the gradient of stress strain graph is Young modulus. If Young modulus value is higher, then obviously its gradient will be steeper. Its gradient will be steeper. So I am repeating, and I think you will explain me. Sir, the gradient of stress strain graph is Young modulus. In this question, the Young modulus of steel is higher, so its gradient will be steeper. जी बेटा अब्दुल्ला, कुछ बोल के बताइए. हाँ जी, स्टील का यंग मॉडुलस हायर है, इसलिए स्टील के ग्राफ का ग्रेडियंट स्टीपर होगा. इफ द यंग मॉडुलस वैल्यू ऑफ स्टील इज हायर, सो इट्स ग्रेडियंट इज स्टीपर. ठीक है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, वन मोर थिंग सर. Limit of proportionality, you know, limit of proportionality means up to the point graph straight line. Okay. The stress limit of proportionality of steel is greater, little greater. So for silk, this is the limit of proportionality, 300. So for steel, its value will be little higher, little higher. So I should have drawn straight line, but little higher than silk. So it is a better answer. It is a better answer in which the limit is higher than silk. Okay. And now the last part of the question. बेटा जैनब आप क्लास में है, जैनब हम आपसे बात कर सकते हैं अगले पार्ट के लिए? ठीक है बेटा. क्वेश्चन ये है, a sample of steel has the same shape, same length, same area of cross section as spider silk. Okay. Each sample is stretched to its limit of proportionality. Explain which sample has greater elastic strain energy. जी, सेम शेप, सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. Which sample has greater elastic strain energy? And remember, area under the curve shows elastic strain energy. So I am guiding you, beta. I should draw green
area, this green area for steel, this green area for steel, and red area for silk. आपको किस में इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है? स्टील में आपको ज्यादा नजर आ रही है, स्टील में आपको ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी ग्राफ थोड़ा रफ बनाया है। और आपकी बात मुझे मार्किंग स्कीम से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या कंक्लूड कर रही है। आप क्या बोल रही हैं, स्टील या सिल्क? आपने किसको ज्यादा बोला है? सिल्क आपको ज्यादा लग रहा है? अच्छा जी, मार्किंग स्कीम कह रही है यस, द एरिया अंडर द स्पाइडर सिल्क ग्राफ इज ग्रेटर। सही है, तो इसलिए वो ग्रेटर होगा। तो ये वाली बात जहन में रखेंगे बेटा, कि इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि सब कुछ हमने सेम रखा है, सेम शेप, सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सब कुछ सेम है। पर काम की बात क्या है, जो आपको आंसर करने के लिए जरूरत है बेटा, वो ये, सर द एरिया, सॉरी द एरिया अंडर द ग्राफ शोज इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। सही जनाब। और इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी से जब आप एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया सर सिल्क वाले का ज्यादा लग रहा है। और मार्किंग स्कीम में भी यही लिखा है, सिल्क वाला एरिया ग्रेटर है, तो सिल्क विल स्टोर ग्रेटर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। ठीक। अलबत्ता एक सवाल मनाहिल से पूछूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि गलत इनसे हो जाएगा। मनाहिल बेटा बताना, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमें क्या बताता है? एक्यूरेट वर्डिंग बोलनी है, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में वो वर्डिंग मैंने नहीं बोली है। ये तो मैंने भी बोला हुआ है, पर मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, आपसे सही कराना चाह रहा हूँ। और अच्छा चले, ये तो मैंने बोल दिया था ना। मैं आपसे जो कहलवाना चाह रहा था, गौर से सुनना भाई, सारे बच्चे गौर से सुनना बेटा, कि व्हेन यू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके, you know stress is force per unit area and strain is extension per unit length, okay, and you know area into length, actually it becomes volume, area into length it becomes volume। ठीक। that's why they said same length same cross sectional area, it means their volume is same। ठीक है ना, स्पेशली दे हाईलाइटेड। बट जो मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के नीचे का अगर आपने एरिया कैलकुलेट करा, तो दिस एरिया विल बी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा मनाहिल, मैं आपसे ये सेंटेंस कहलवाना चाह रहा था, पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपको भी याद नहीं आया। तो व्हेन यू कैलकुलेट एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, it is simple elastic strain energy. But when you calculate area under stress strain graph, it is equal to वर्क और इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये आपके कोर्स में है, ठीक है जी, इसलिए मैंने स्पेशली आपको ये बात याद दिलाई है। खैर, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी, जो बेटा जैनब यकीनन आपको भी समझ में आ गई होगी, कि एरिया अंडर द सिल्क ग्राफ इज ग्रेटर, तो सिल्क स्टोर्स ग्रेटर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। अच्छा जी। अ डीप सी डाइवर, अच्छा जी, ये तो बच्चों वाला सवाल है, स्टोक्स लॉ बताएं, आपको आता है? और ये सवाल मैं रेगुलर क्लास में करा चुका हूँ आपको, ठीक है जी, ये रेगुलर क्लास में करा चुका हूँ, ये भी आपसे हो जाएगा आराम से, इसमें भी मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, जरा सुने। ये है वर्टिकल वेलोसिटी ग्राफ, दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी ग्राफ फॉर अ डाइवर वेरी ड्यूरिंग अ डाइव। ठीक है जी। द डाइवर वॉज एट द सरफेस ऑफ सी एट 0 सेकेंड, दिस इज 0 सेकेंड टाइम। Explain how the graph could be used to show that the diver reaches the surface of the sea again at 82 seconds. When he is at 82 seconds, ठीक है जनाब, he will be again on the surface.
then how can it be showed by graph? So the answer is, sir, you know it is velocity time graph, and if we calculate the area of speed time graph, velocity time graph, and this area of velocity time graph, you will see this is negative distance, negative displacement, and this is positive displacement. And if they are equal in magnitude, if they are equal in magnitude, okay, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर और उनका टोटल जीरो हो जाएगा. और अगर उनका टोटल जीरो हो गया तो इसका मतलब होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो. और डिस्प्लेसमेंट जीरो जब ही होता है जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का टोटल निकालते हैं. ठीक है जनाब. तो आप यूँ लिखोगे, मैं अब लिख नहीं रहा बल्कि मार्किंग स्कीम सुना रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है. द एरिया बिटवीन द लाइन मीन्स ग्राफ, द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस should be calculated, and this area above x-axis is positive and below x-axis is negative, so total displacement is zero. And if total displacement is zero, it shows that the diver will be again on the surface of water at 82 seconds. दो areas निकालेंगे, calculate नहीं करना, you do not have to calculate, only you have to write, explain, do not calculate, सिर्फ explain करना है जो कि मैंने आपको सुना दिया. जी सिमरा, can you explain why this graph shows, how this graph shows a diver will be on the surface of sea again at 82 seconds? जी सिमरा, can you explain? Simra, the area between the graph and x-axis is calculated. The area above x-axis is positive. The area below x-axis is negative. These areas, if these areas are equal, then total displacement will be zero. So the diver will be on the surface of the sea again at 82 seconds. Simra beta, are you in class? Okay beta. And now the last part of the question. Determine the vertical acceleration. You have to calculate acceleration at 70th second. Sir, where is 70th second? This is 70th second. And they are asking to calculate acceleration. You know, if the graph is a curve, then you should draw a tangent on the curve at 70th second. At 70th second, I have drawn a tangent. Okay. And you should calculate the gradient of the tangent, which we are not calculating right now. And this gradient will be equal to vertical acceleration. So